Hello everyone, welcome back to my channel. With Navratri starting, I would like to wish everyone happy Navratri. क्योंकि अब नवरात्रि शुरू हो चुका है और हम सभी सोच रहे हैं कि फेस्टिव लुक में कुछ एक्सपेरिमेंट करें। तो आज का वीडियो बहुत सिंपल है। मैं आज आपको रिव्यू करने वाली हूँ एक ऐसा एसेंशियल ऑयल जो आपके लुक को पूरा चेंज कर देगा। तो विदाउट वेटिंग, लेट्स गेट टू द वीडियो। और ये है वो एसेंशियल ऑयल विच इज़ रोज़ गोल्ड ऑयल। मैंने ये ऑयल अमेज़ॉन से परचेज किया है। Trust me, this oil is a must-have for any festive need. तो ये ऑयल इज़ 100% ऑर्गेनिक, इसमें केमिकल्स बिल्कुल नहीं हैं. इट इज़ अ नॉर्मल एसेंशियल ऑयल विच यू कैन यूज़ फॉर योर रेगुलर वेयर. And let me read out the ingredients to you very quickly. ROSEHIP oil, as it hydrates, moisturizes and brightens skin. ARGON oil, it protects skin from anti-aging and sun damage. Sweet almond oil, it is rich in vitamin A, E, omega-3 fatty acids. और कई सारे एसेंशियल ऑयल्स जैसे ट्राइग्लिसराइड्स, कैरेट सीड ऑयल, गोल्ड डस्ट पार्टिकल्स एंड लेमन ग्रास। दोस्तों, इसकी ओरिजिनल प्राइस है 1250, बट आफ्टर डिस्काउंट हमें ये पड़ रहा है 750 रुपीज़ फ्रॉम अमेज़ॉन। इसकी क्वांटिटी है 25 ml. Now this is the rose gold oil from the Beauty Co, and I'm completely in love with this product because it makes my skin look dewy and it gives it a glowy look. आपको हमेशा अगर मेकअप करना पसंद नहीं है, because I don't prefer doing makeup all the time, you can just dab this oil to your face and just apply a little bit of lip balm and you're ready for your regular outing, which is what I like about this essential oil. And it is 100% organic, which is like a brilliant thing, and I would really recommend this to any girl doing a lot of makeup. So this is a must buy for all the girls who don't like doing makeup all the time. अब मैं आपको ये ऑयल के साथ लुक्स बताऊंगी जो आप बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। Alright, so the first look is the one I'm in already. इसमें मैंने थोड़ा सा रोज़ गोल्ड ऑयल लगाया है and I kept it on my skin for 2 to 3 minutes and then I applied foundation on top of it. It's exactly the same look I am in. So I'm going to repeat the same procedure and show you how I have done this makeup or have applied rose gold oil and then applied foundation. So let's get to the first look. First I'm going to take 3 drops of this oil and I'm going to show you 1, 2 and 3. Sorry, exactly 3 drops of. So I'm going to gently apply this on my skin and going to give a gentle massage. Apply this oil with the help of your fingertips and give it a gentle massage. Let me tell you, this oil is non-greasy and I really love the way this is textured. Parlor style glowy look skin बस 3 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल से अब घर में मिलेगा। So as you can see, मेरा स्किन अभी शाइन हो रहा है and I can also feel that smoothness in my skin, the suppleness in my skin, which I'm really loving, and I just massage it like this for 2 to 3 minutes. It's a very gentle massage and then I apply some foundation to just conceal my under eyes or dark circles or any dark spots, and then I'm good to go. I just apply a little bit of lip balm and there you go. Not जैसे आप देख सकते हो, it's almost 2 to 3 minutes from the time I applied oil, so I have given it a gentle massage and it gives a very dewy and shiny look. Now it's time to apply my liquid foundation. I would highly recommend using a liquid foundation instead of a powder compact because ऑयल के ऊपर पाउडर लगाने की वजह से आपकी स्किन बहुत केकी हो जाती है. It gives a very false appearance and it doesn't look very natural. तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा लिक्विड फाउंडेशन या मैंने इसको भी ज़्यादा नहीं लगाना है. I'm just going to take 2 to 3 drops of this and just going to cover my areas which are जिसमें डार्क सर्कल्स है या डार्क स्पॉट्स है. यूजुअली मेरे को डार्क सर्कल्स होते हैं अंडर आइज एंड some black spots around my lips, so I just apply that and I cover it off and I don't do a lot of makeup. Just take 3 drops of foundation and apply it over. So it gives you a very natural look.
ओके, आप कहीं पे भी ये लुक को कैरी कर सकते हो। मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है और ये ऑयल लगाने के बाद मुझे ब्रेकआउट्स बिल्कुल नहीं आए। मेरी स्किन बहुत अच्छी हुई, ग्लोई हुई और मेकअप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। So this is my final look after applying foundation and it looks very natural like you can see. This is the first look, जैसे आप देख सकते हो, very simple and you can carry this over anywhere. इसके सिवा मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि look, जिसमें आप heavy makeup कर सकते हो with this rose gold oil which makes your skin look shiny, glowy and also you're ready for any festive, be it Dashera, Diwali, Christmas, New Year, you are festive ready. दिस इज़ द सेकेंड फेस्टिव लुक, जिसमें मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है मेरे लिक्विड फाउंडेशन के ऊपर और थोड़ा सा मेकअप किया है, थोड़ा डार्क लिप शेड लगाया है एंड सम ज्वेलरी एंड योर नवरात्रि रेडी, राइट। सो मेरा फेस्टिव लुक अभी कंप्लीट हो चुका है विद जस्ट रोज़ गोल्ड ऑयल। इट गिव्स यू अ ड्यूई लुक लाइक यू कैन सी। मैंने इसमें ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, मैंने जो फाउंडेशन और रोज़ गोल्ड ऑयल मिक्स करके लगाया था मेरे स्किन में, वही मेरे स्किन का बेस है। उसके ऊपर से बस मैंने थोड़े फिनिशिंग टचेस दिए हैं। इनफैक्ट मैंने आई मेकअप भी नहीं किया है। इट्स रियली वेरी सिंपल एंड यू रेडी टू गो फॉर योर नवरात्रि लुक। आई एम वेयरिंग अ घाघरा एट द मोमेंट. That's it for today. I hope you liked this video. If you liked the video, please do not forget to like, share and subscribe. Stay connected for another video from Hyderabadi Amma. Take care. Bye-bye.